फुल स्क्रीन करना पड़ेगा ना, दिखता पीछे बेंचेस को। सो वी आर कमिंग। सो कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, सो हु इज इट अप्लाई, टू हुम, किस किस को अप्लाई होता है ये? माइनॉरिटीज को, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बैकवर्ड क्लासेस, फॉरेनर्स स्टेइंग इन इंडिया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑल माइनॉरिटीज। व्हाई? बिकॉज माइनॉरिटीज मीन्स, व्हाट डू यू मीन? माइनॉरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? माइनॉरिटी का मतलब देखिए अपनी कंट्री में जो है, अभी अपन जैसा पढ़े कल्चर पढ़े, वैसे जो है रिलीजन है, उसमें रिलीजन में कास्ट है, कास्ट में सब कास्ट हैं बराबर, रिलीजन है, हिंदूज है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, पारसीज है, बुद्धिस्ट है, लाइकवाइज मैनी। फिर उसमें जो है आदिवासीज है बराबर है। तो उसमें क्या है, देर आर क्लास, people of class also, high class and lower class, right? Middle class, poor people are also there. So minority, it is deemed that the community, that religion, that particular, who are majority in poor, and the major, it is seen that the religion or the community who are rich in class. So while ascertaining the SIR हो रहा, अभी आपका क्यों होता है एवरी 5 years जो है SIR होता, पहले जो है कुछ और दूसरे नाम से होता था, तो उसमें क्या होता, उसमें पूरा काउंट करते, उसमें कितने एजुकेटेड है, कितने परसेंट जो है, कितने जने, कितने आदमियां हैं, कितने, हाउ मेनी मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, व्हाट आर दे डूइंग, how much is the, what are their living standards, what is their business. So all these things will be calculated and it will be registered and the data will be with the government. So accordingly government will plan for their next 5-year plans. You heard about it, 5 years plan. Earlier initially we started with the agriculture plan, then industrial, then so on. Now education also they plan. So likewise to minorities, to uplift the minority, to make the equality before the, among the, in the status of the country, that no society should be among the poor or the, there should be no rich class or poor class. Yesterday I have studied now, next 5 years, next 10 years, that has been extended, minority reservation, right? पढ़ाए थे ना कल में, पढ़े ना अपन कल। सो वही है, तो इक्वालिटी लाने के लिए जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सो 4% रिजर्वेशन इज देयर, राइट? आप लोग 4% रिजर्वेशन एजुकेशन में। व्हाई? बिकॉज देयर शुड बी ऑल्सो पीपल among all the class and sections of the society. Doctors should be there in equal comparison, engineers and lawyers and so on. So likewise, and इसमें foreigners staying in India का मतलब क्या है? तो कौन रहते हैं foreigners? Indian citizen. NRIs, non-residential Indians, right? People from other countries will be coming to India for studying engineering, medicine. Likewise, people from India, students go to other countries like China and other countries, right? So that thing is there. So that is not applicable. Unlike जैसा वोटिंग राइट में जो है आर्टिकल पूरे फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट नहीं रहती फॉरेनर्स को, बराबर है ना? तो वैसे ही जो है इन लोगों को जो है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, इन लोगों को स्कॉलरशिप्स वगैरह जो भी रहते हैं, सो दैट राइट्स वोंट बी एप्लीकेबल टू द फॉरेनर्स, रिजर्वेशन वोंट बी देयर फॉर द फॉरेनर्स. If it is otherwise that some percent, 2%, 4%, only that percentage will be reserved for the foreigners, not more than that. Why? Because first priority will be given to the locals. Likewise in your law set also, if you write the law set exam or other exams, people from other states will also come, but priority will be given to you people, the people who are domicile of the state. Likewise, if we go to the other state for writing any exams also, they will also have the same criteria. They will set some standards, some reservation, 4%, 10%, only to the people from the other states. Majority will be from the native state. So the cultural and educational rights are guaranteed mainly to minorities under Article 29 and 30, right? The Constitution of India, these rights protect the language, script and culture of minority communities. Article 29 और Article 30 दो आर्टिकल्स है। ये क्या बोल रहे हैं बोले तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये जो दो आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है? They also give minorities the right to establish and administer educational institutes of their choice. The purpose is to preserve the cultural identity of religious and linguistic minorities. इसका मतलब क्या है? To administer, establish educational institutes, माने क्या है? माइनॉरिटीज को, माइनॉरिटीज के कॉलेज रहते हैं, माइनॉरिटी स्कूल्स रहते हैं, बराबर है?
You have like Gurukuls for the Hindus. Hindu Banaras University is there. A legal Muslim university was there. That were granted by the then government. Now also the same thing is being done. You see many colleges like Sultanum College, that is minority college. So you will have reservation over there. Even general public will be taken, but first priority will be given to the mandatory students, then to the minorities, then to the other people, right? समझ में आया ना? पहले जो रैंक जो फर्स्ट रैंकर्स है, रैंक होल्डर्स को आता है, सेकंड जो है फिर माइनॉरिटीज में जो भी है माइनॉरिटीज वालों को आता है, फिर जो है अदर्स जो भी आते हैं उस कैटेगरी में उन लोगों को आएगा. ठीक है. माइनॉरिटीज में कौन कौन आते हैं? मुस्लिम्स में भी कास्ट है. Few castes are there, not Sayyids and all. They are upper. They belong to even. They are deemed to be upper caste, and SCs, STs, BCs, right? In that also subcategories are there. So that is the thing. दिख रहा है आप लोगों को पीछे लास्ट बेंचर्स पूरा? ओके. The right to educational remedies is political right, civil right, fundamental right, directive principles of state policy. क्या है right to constitutional remedies? Fundamental rights. Why is it called fundamental? Why is it relating? Why are you relating fundamental constitutional remedies to fundamental rights? क्या रिलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का और फंडामेंटल राइट्स का? कल पढ़े थे अपन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या था वो? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35, राइट? बराबर है ना? पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स थे. फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक. बराबर है? राइट? पढ़ रहे हैं ना आप लोग? सो कॉन्स्टिट्यूशन राइट डायरेक्ट इट हैज रिलेशन विद द फंडामेंटल राइट्स. ओके. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस में आते हैं? पार्ट कौन से पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. बोलिए आप लोग सब जने हैं. हाँ, पार्ट 4, राइट? जोर से बोलिए. पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, राइट? अच्छे से याद रखना है इसको. सिविल तो नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. वाई? बिकॉज सिविल राइट्स वी हैव डिस्कस, राइट? 44th अमेंडमेंट, राइट टू व्हाट इज दैट अमेंडमेंट? व्हाट हैज बीन डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट? सो ये भी गलत आंसर होता है. पॉलिटिकल राइट क्या होती है इसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स को है रिलेशन? नॉट हियर. व्हाई? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स, देयर आर अदर लॉज मेड फॉर दैट. Lists are there, other things are there that will be mentioned in that. So right now it is dealing constitutional remedies deals with the fundamental rights, right? अगर constitutional right या fundamental right हुआ तो क्या कर सकते हैं आप? Article 32 and Article 226 you can approach the High Court or the Supreme Court, right? The right of constitutional remedies guaranteed under Article 32 of the Constitution. वही बोल रहा है यहाँ पर. It gives citizens the right to approach the court, Supreme Court, for the enforcement of the fundamental rights. The court can issue writs such as habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto. As B.R. Ambedkar also called Article 32 as the whole soul and heart and soul of the Constitution. So, heart and what is the heart and soul of the Constitution? Which article is the heart and soul of the Constitution of according to Fundamental Rights Constitution? Heart और soul, दिल और किस चीज को बोल रहे हैं? आर्टिकल कौन सा? Article 32. आर्टिकल 32, राइट? नाउ नेक्स्ट. समझ में आ गया सबको ये? नेक्स्ट. That question might be also anywhere it might be coming. What is the heart and soul of the Constitution? What will you answer? Next, what is directive principles? Directive principles of the state policy can be enforced through courts of law or only through Supreme Court, only through the government, non-enforceable. So what might be the correct answer? Why? Then what are the enforceable rights that you can enforce before the courts of law? Fundamental rights, right? So note the directive principles of state policy cannot be enforced by any court of law. According to Article 37, 12 to 36 is fundamental rights. 37 from 37 part 4 37 that are directive principles. 37 of the Constitution of India. They are non-justiciable in nature. However, they are fundamental in governance.
of the country, and it is duty of the state to apply them while making the laws and policies. So it is totally not deniable by the state that it is not enforceable, so the country, so the state will not apply, isn't it? जब भी लॉज कोई भी बनेंगे, स्टेट का पावर क्या रहता है? स्टेट के पास भी पावर रहता है, बोला सेंट्रल एंट्रीज में कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, बराबर कल पढ़े थे अपन। उसमें क्या है? स्टेट लिस्ट आती, कॉन्करेंट लिस्ट आती है। तो स्टेट लिस्ट में जो है पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वॉट एवर जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, जो डिसीजंस बनाएंगे, वेलफेयर मेजर्स लेंगे पब्लिक के लिए, तो इसको जो है मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो भी खैर मकदम, जो भी जो है, जैसा आपके एग्जाम्पल यू हैव स्कॉलरशिप्स एंड डबल बेडरूम गवर्नमेंट इज गिविंग यू, and other schemes like they are giving bus facilities, and scooters also they are giving discount on electricity 30% to the government employees. So that all comes under directive principles. Please come in. Directive principles of the state policy, right? But you cannot challenge, but you cannot enforce. If the one government comes, the other government cancels, or the other government creates some new policies for you, so you cannot challenge that before the court of law. Why you cannot enforce? As per which policy, which article, which decision? No. Why? Because I mentioned you, कल बोला था मैं, legislative, executive and judiciary, they cannot interfere each into the ambit of the other. They have their own ambit, बराबर है। लेजिस्लेटिव जो है एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं करती। लेजिस्लेटिव कौन है? मेंबर्स ऑफ असेंबली और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हियर मेंबर ऑफ MLAs आर देयर, सो the judiciary cannot interfere in that. If you file the case before the court will not take up whatever the cases you are filing, right? Even if you file the public litigation, did you hear about the public interest litigation? क्या रहता public interest litigation? वॉट एवर, कुछ भी आप जो है पब्लिक के फेवर में कुछ कुछ गलत हो रहा, पब्लिक के जो है नुकसान हो रहा, मास मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक को कोई आप जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं, बराबर है। तो केसेस कैसे रहते हैं? पहले जो है देयर वर रिलेटिंग टू द फॉरेस्ट, द प्लांटेशंस दैट वर बीइंग कट डाउन, एंड सो अदर वेलफेयर एक्टिविटीज वर बीइंग टेकन, especially like Vikharabad, you have next district Vikharabad, so their factories, industries are prohibited, banned, वहाँ पर factories, industries नहीं बना सकते। Why? It is because like a little forest, वहाँ पर अगर industries वगैरह बनाएंगे तो फिर pollution होगा पूरा, it will lead to ecological imbalance, right? So if you file the case and you want to establish a factory or industry or a hotel near the seashore somewhere, some like Andhra it is there, so every year वहाँ पर क्या होता? पानी आता, so वो होता, so you cannot enforce everything into the court of law. The cases will be dismissed and penalty will be imposed, right? So उसके लिए जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसके लिए आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको, the court won't interfere into that. नेक्स्ट एंग्लो इंडियंस का क्या है? एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा और डिपेंडिंग अपॉन हु आर एंग्लो इंडियंस? एंग्लो इंडियंस कौन है? द ब्रिटिशर्स, राइट? एंग्लो मीन्स इंग्लिश पीपल. So earlier India was, before the independence, India was ruled by the British, right? So later on, after the independence, what has happened? Why? Because even some states, like they were princely state, like Hyderabad and other states were there, so that were dominated by the British, even during that time. After the accession of the Indian government, and Indian government took charge of the Hyderabad, before that few states were ruling. So for that, their few people of the English people were residing, so for their rights, to enforce their right and to make their voice in the legislature or the parliament, two Anglo Indians were there, so that were predominantly in many states. There two members were there by the government. So now you don't find, but you will see like Rahul Gandhi, Anglo Indian, her mother, she is not an Indian, right? Cases our government are enforcing them, so there are other issues, so that is not, but for example I am telling you that. So Anglo Indians are nominated by the president to Lok Sabha depending upon their population in the country, their demands on the recommendations by the election commission, a read number not exceeding 2. So what is the correct answer? A read number not exceeding 2, not more than 2 members,
right? Note, under the Article 331 of the Constitution of India, the President could nominate up to 2 members of the Anglo-Indian community to the Lok Sabha if he was the opinion that the community was not adequately represented in the House. Not adequately represented, इसमें मतलब क्या हो रहा? Not adequately का मतलब where is it? Yeah, pen is there. I'll take, right. So under the Article 3, committee Lok Sabha उधर. The provision intended to ensure the representation of the small minority. So here also minority is there, right? Unlike now, we are being represented as the minority for the education cultural rights. So they were the minorities during the during the period when the parliament was newly formed and the government of India was newly formed. At that time, Britishers were only in very small for their representation. So minorities in parliament, the nomination was discretionary and based on the president's assessment of adequate representation. So there were different states like Calcutta, Madras. So that were the princely state. Then there were the high court. First high court was the Madras. You know, are you aware of that? That Madras was the first high court and Supreme Court were established there, and thereafter other high courts are established in each state. So the nomination was discretionary. So whether to have that only that two nominated members, दो जो nominated members है उसको भी करना या रखना या ना रखना जो है प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन में पावर में था. क्यों बोले तो अगर वहां पर ब्रिटिशर्स है वहां पर तो ओनली देन दे वर बीइंग चांस टू रिप्रेजेंट बिफोर द पार्लियामेंट और द असेंबली, राइट. अगर वहां पर कम है अगर या बिल्कुल भी नहीं है तो जो है हैदराबाद निजाम स्टेट था, यहाँ पर जरूरत नहीं है. सो हैदराबाद में कोई भी मेंबर्स नहीं थे वहां पर. ओके, नेक्स्ट. एंटी डिफेक्शन लॉ. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन, you have the members of parliament and the member of assembly, right? Sir, you're not audible. Wait for 5 minutes. अजा हो रही है.
Next, coming back, anti-defection law. So anti-defection law is the law which stops any legislature to use any parliamentary language in the house, or the things which are, there are certain things which they are forbidden to state in, like you have seen recently Kejriwal case and Rahul Gandhi and Raghav Chadha case. So why were they disqualified? So there are certain rules, norms. If see you are in the school, you are in the college, you will have certain, you need to follow certain guidelines, right? You need to carry your ID card, certain percentage of attendance, and you need to write the exams. And also there, for the, even for the members of parliament and member of legislative assembly, there will be certain laws. उनके लिए भी कुछ कानून कायद रहते हैं. अगर वो उनको अगर उसके लिए बाहर गए, उन्होंने वो दायरे के बाहर गए, मीडिया में कुछ नहीं बोलना है, मीडिया में कुछ बोले, कुछ लॉज रहते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द असेंबली एंड पार्लियामेंट फॉर द benefit of the public. So that has to be like defense, like you have now going on acceleration, wars are going on, and you have certain education bills, diplomatic, so that things, certain things cannot be brought into the public. Defense secrets will be there, so that cannot be brought into the public domain for the welfare of the general public. So if they bring anything like that in the public domain, and there will create a havoc, and उसमें पब्लिक को अगर लाए वो बात, तो पब्लिक जो है बहुत परेशान होती है. जैसा हो रहा, गैस खत्म हो गया बोले कोई अफवाह उड़ा है, गैस का पूरा जो है पेट्रोल पंप पूरे ब्लॉक हो गए. तो दैट थिंग्स हैज नॉट टू बी done by the legislature, so they are stopped from doing this. So if that is done, anti-defection law, when was it brought into the parliament? From the 91st Amendment Act 2003, right? 91st Amendment Act, you need to remember this, 91st Amendment Act 2003, and this second is 52nd Amendment Act, anti-defection law. So the moment anti-defection law comes to your mind, what three things you should remember? 52nd Amendment and 91st Amendment Act 2003. 52nd Amendment हो गया था, उसके बाद क्या हुआ? 92nd. The anti-defection law in India was passed through the 52nd constitutional amendment. Like you have अभी जैसा अपन डिस्कस करें 44th Amendment से लैंड लॉज रिफॉर्म्स हो गए थे, राइट? उसी तरह जो है यहाँ पर भी 52nd Amendment कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1985 में, which was added to the 10th schedule. कल पढ़े थे अपन 7th शेड्यूल में थे, पूरे इलेक्शन कमीशन के जितने भी लॉज थे इलेक्शन 7th शेड्यूल में थे. अब इसका जो है रिलेशन जो है 10th शेड्यूल में है. Schedules, amendments, articles, right? This amendment introduced the provision to disqualify the members of parliament and state legislature. See, दोनों को भी अप्लाई होता है ये लॉ. टू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन. डिफेक्शन यानी कोई भी गलती करे या कोई भी मिस्टेक करे उसके लिए. इट वाज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट टू कर्ब द पॉलिटिकल डिफेक्शंस. कर्ब यानी उसको पकड़ होना, कुछ गलती करे तो जो है उनके लिए भी विप बोल के एक रहता, दिखे वो रहता है. एंटी डिफेक्शन लॉ टू एंश्योर द स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट. स्टेबिलिटी का मायने गवर्नमेंट को जो है एक हिसाब से चलाने के लिए. लेटर दी 91st Amendment Act 2003 amended certain aspects of this law. ये कैसा है बोलते, आपको एग्जांपल देता हूँ मैं. पहले अपने पास बीएनएस जैसा था, आईपीसी था, सीआरपीसी था, जाके वो जो है फिर बीएनएस बना. सो वैसे लाइकवाइज जो है 91st Amendment 2003 का जो है पहले 1985 में बना था, तो उसको फिर जो है रिफॉर्म करके एक्ट 2003 बनाए विथ रिसेंट अमेंडमेंट्स, राइट? नेक्स्ट 48 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद. सी देखिए, अभी मैं जैसा बोला था अमेंडमेंट एक्ट नीचे पूछ रहे हैं, कभी आपको भी ऐसा भी ऊपर भी पूछते हैं, ऐसा भी हो सकता. तो आप उसके लिए अच्छा याद रखना कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा अमेंडमेंट. 52nd है, 48 है. 48 अमेंडमेंट ड्यूरिंग द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 356. So it is relating to the 48th Amendment of the Constitution deals with extension of reservation to backwards, extension of President's rule in Punjab, dissolution of Punjab Assembly, postponement of elections to Delhi Metropolitan Council. So the right answer is extension of President's rule in Punjab. पंजाब में अमृतसर में वो हुआ था, आपको शायद मालूम है क्या हुआ था? गोल्डन टेम्पल. Terrorists were there in the temple. So when the government came to know about that, they launched Operation Polo. So Indian Army came there and for 3 days वहाँ की जो भी जो आसपास वहाँ पर जो भी है पूरा दुकान वगैरह सब एरिया पूरा बंद करा देते, पूरा कर्फ्यू. होप यू हैव सीन कर्फ्यू, देखे आप लोग कभी? हाल में कुछ फ्यू इयर्स बैक इट वाज लाइक लॉकडाउन.
You are not allowed to go outside. Everywhere barricades were there, and the CRPF or the armed forces from the central forces, they will be deployed in each lane wherever possible. So like that वहां पर क्या हुआ था, जब जो प्रेसिडेंट रूल लग गया था वहां पर, तो असेंबली कल अपन डिस्कस कर रहे थे प्रेसिडेंट रूल कब लगता, जब भी जैसा मणिपुर में लगा था, तो स्टेट असेंबली पावर्स किसके भी कोई भी कुछ भी नहीं करते, जब एवरीथिंग विल कम टू अ हॉल्ट, प्रेसिडेंट विल गवर्न थ्रू अ गवर्नर in the position of administrator, right? So likewise यहाँ पर 48th amendment of the constitution, mainly India dealt with amending article 365 to allow extension of president's rule in the state of Punjab beyond 1 year without satisfying the usual special conditions. ये 1 year क्यों लगा है विदाउट एक्सटेंशन पीरियड, बोलिए, कल पढ़े थे अपन ये, कभी प्रेसिडेंट रूल लगा तो कितना होता है, ऑटोमेटिक एक्सटेंशन कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 1 year, देन उसको फिर फर्दर एक्सटेंशन कितना कर सकते हैं, 6 months, राइट? फिर 1 year भूल गए क्यों आप लोग? So whenever president rule जब भी लगता है, yesterday also discussed about the Indira Gandhi when she national emergency declare हुई थी, right? वो भी पढ़े थे. So emergency के provisions है, वो एक बार देख लीजिए. So according to 48th amendment, extension of the president rule in Punjab was in force, right? Next coming 83rd. Indian Constitution contains in all how many articles? 400 articles, 390 articles, 395 articles, none of the above. Presently अभी कितने articles हैं? 395. The Indian Constitution originally contained 395 articles when it was adopted and came into force on 26 January 1950. Over time, due to several constitutional amendments, the total number of articles has increased beyond the original count. While it is often said to have more than 440 to 470 articles today, the foundational numbering still refers to Article 1 to 395 as the main scheme. Therefore, the statement that the Constitution contains 395 articles originally is correct. अभी इसके बाद जैसा अपन देखें आर्टिकल्स के अमेंडमेंट्स होते जा रहे हैं, जैसा सिक्किम को लिए एक अमेंडमेंट आया, फिर ये इसका अभी जो पंजाब को एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, उसको एक अमेंडमेंट आया. सो लाइकवाइज यू हैव 395 आर्टिकल. ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, तो वो तो जैसा बढ़ते रहते, जैसा अपन कल पढ़े थे, हाईकोर्ट के बेंचेस बढ़ते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते, बेंचेस बढ़ते. सो लाइकवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है आर्टिकल्स बढ़ते रहते हैं. सो बट ओरिजिनली इट इज 395, राइट? यू शुड रिमेंबर, बढ़ते कम होते हैं उसमें. जैसे आपको आईपीसी में भी जो है सेक्शंस बहुत ज्यादा थे, अभी क्या करे उसमें सेक्शंस कम कर दिए, कॉम्प्रेस कर दिए, उसमें सेक्शंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब क्लॉजेस वैसा लगा दिए. पहले जो है अटेम्प्ट का एक सेक्शन था, कमिट अगर करे तो अलग था, अटेम्प्ट का कमीशन का पूरा एक में आ गया आईपीसी में, राइट? ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 22 पार्ट्स. शेड्यूल्स कितने हैं? 12 शेड्यूल्स. एंड आर्टिकल्स 395, राइट? तो ऐसा सीक्वेंस में याद रख लेना बराबर. तो 22 article. Originally the constitution had 22 parts at the time of adoption, but additional parts were added later through the constitutional amendment. The part form the structure framework of the constitution's text. इसमें पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का मतलब क्या हो रहा है इसमें? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क. बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े थे कल अपन, राइट? याद है बेसिक स्ट्रक्चर. सो वॉट एवर द लॉज आर मेड, दे आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? जितने भी आईपीसी, बीएनएस है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, पूरे एक्ट्स जितने भी है वो एज पर दैट बनते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मतलब उसमें जो है व्हाट ऑल इट इंक्लूड्स, प्रियम्बल, राइट? प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो उसका मतलब वो है. होप यू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट, इंडियन पेनल कोड इज प्रोसीजरल लॉ, सब्सटैंटिव लॉ, सिविल लॉ, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. क्या करेक्ट आंसर इसमें? सब्सटैंटिव लॉ मतलब बेसिक लॉ, बराबर है. The Indian Penal Code (IPC) is a substantive law. It defines various offences, their essence, elements, and prescribes the punishments for them. Therefore, thereby determining the rights, duties, and liabilities. इसमें आपको राइट्स है, ड्यूटीज है, राइट्स है, आई वांट
ओके नेक्स्ट ये है ना शेड्यूल्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने शेड्यूल्स है इसमें? 9 शेड्यूल्स। द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रेजेंटली 9 शेड्यूल्स। ये भूल गया, छूट गया था आप लोग, कोई बोल रहे भी नहीं, नहीं देख रहे आप लोग, बाय मिस्टेक आई हैव ओवरलुक्ड इट। सो इंडियन पेनल कोड नेक्स्ट। ये सब्सटेंटिव लॉ क्यों है? मैं कल बोला था आप लोगों को ऑलरेडी जो है, आफ्टर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद पर्सनल लॉज के तहत जो है आपको मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ था, हिंदूज को हिंदू लॉ, क्रिश्चियंस को क्रिश्चियंस लॉ, पारसीज को पारसी लॉ था बराबर। वहां से क्या हुआ फिर, जो भी रिलीजियस के लॉज लेके पनिश करना चाह रहे थे वो जो है बराबर फ्रेमवर्क में, किसी को पनिशमेंट ज्यादा हो जा रही थी, कोई चोरी करे तो चोर को जो है कोई रिलीजन में ज्यादा पनिशमेंट है, कोई इसमें कम है, तो वो सब देख के क्या करे थे, एक इंडियन पेनल कोड, एक कोडिफाइड लॉ बनाए थे बराबर, ब्रिटिश एज पर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद क्या हुआ फिर, उसके तहत सीआरपीसी बना। अगर कुछ कोई गलत करा, कोई चोरी करा तो उसका प्रोसीजर कैसा रहना, उसको कैसा केस चलाना उसका, फिर उन्हें करा सो कैसा करा, उसको सबूत देखते उसका, एविडेंस एक्ट था बराबर। तो वैसे ही जो है सब्सटेंटिव लॉ आईपीसी था। प्रोसीजरल लॉ क्या होता, सीआरपीसी होता। ठीक है, सिविल लॉ इज relating to the properties and other religious issues, part of constitutional law. It is not a part of constitutional law. Why? Because through constitution only all these laws have come into existence, right? So IPC is the basic domain. Substantive law means through IPC से जो भी crimes होता उसका सेक्शन होता, क्या crime है उसका सेक्शन उसमें मेंशन होता, राइट? तो substantive law that is the basic law, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कैसा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर भी जो है इंडियन पेनल कोड इज द सब्सटेंटिव लॉ, राइट? नॉट ऑल द लॉज आर सब्सटेंटिव। देखिए यहाँ पर अगर सीआरपीसी होता या सीपीसी होता तो इसको भी सब्सटेंटिव लॉ बोलते थे, तो सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, खाली आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, राइट? नेक्स्ट, द इंडियन पेनल कोड आईपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ। इट डिफाइंस वेरियस ऑफेंसेस। अभी जैसा बोला आपको, जो भी सजा, जो गुनाह करे, जो भी जुर्म करे उसकी सजा रहती है उसमें, उसके अकॉर्डिंग टू दैट देयर एसेंशियल एलिमेंट्स एंड प्रेस्क्राइब्स देयर एसेंशियल एलिमेंट्स एंड प्रेस्क्राइब्स पनिशमेंट्स फॉर देम। वो जो भी जुर्म करे उसके तहत जो है उसकी पनिशमेंट रहती है, देयर बाय डिटरमाइनिंग द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। अगर करा उन्हें, अगर गलत राइट्स कैसा है, बोलो आप राइट्स का एग्जांपल दीजिए, राइट कैसा हो रहा है इसमें, गलत करा तो इसमें डबल जियोपार्डी पढ़े अपन, राइट? आर्टिकल 22 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 2 कल पढ़े, डबल जियोपार्डी। तो डबल जियोपार्डी क्या हो रहा है, इसको राइट हो रहा है, अगर एक बार कोई इसके ऊपर केस हो गया तो फिर केस खत्म हो गया तो उसको जो है फिर केस नहीं डाल सकते उसके ऊपर, या केस जीत गया उन्हें बोल के फिर दूसरे कोर्ट में जाके फिर उसके ऊपर नहीं डाल सकते। अगर करना है तो अपील कर सकते हैं, सेशंस को जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। लाइक अगर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशन का जैसा एग्जांपल दिया मैं, दिलसुख नगर है, हैदराबाद है, ये दो डिस्ट्रिक्ट में जाके कर दिए केस, या एक डिस्ट्रिक्ट में होगा तो फिर जाके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं डाल सकते केस, बीट द सिविल केस ऑल्सो। तो क्या होता है वहां पर, अगर सेम केस डाला तो क्या नुकसान क्या होता है वहां पर, एक जज साहब एक्विटल देते, एक सब जज साहब कन्विक्शन देते, तो क्या होता, क्या होता उसमें इंसाफ नहीं होता, नहीं हो रहा बोल के पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में व्हाट विल बी डन, व्हाट विल बी डन, कोई वो जज साहब भी नहीं करते। वो कैसा होता है, एविडेंस आके कोई गवाह कुछ यहाँ पर बोलता, कुछ भूल जाता, बाकी का पार्ट आके यहाँ बोलता, फिर कभी हॉस्टाइल हो जाता क्लाइंट। कभी हॉस्टाइल का मतलब क्या है, याद नहीं रहता, कभी कई बहुत साल हुए तो क्या होता, भूल जाते, भूल गए तो याद नहीं होता। ये केस कभी जल्दी खत्म होता है यहाँ, अगर समझिए फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में केस ज्यादा है, यहाँ ट्रायल जल्दी होता, वहां पर ट्रायल जो है मर जाता, अगर विटनेस मर गया तो क्या होता, फिर कौन आके बोलता, देखा सो वाला चश्मदीद गवाह कोई भी नहीं रहता, उसमें क्या होता, फिर एक्विटल हो जाता। एक केस में एक्विटल हो रहा है, एक केस में कन्विक्शन हो रहा है, कैसा होता, नहीं होता। फिर लाइकवाइज अगर आप सिविल केसेस में भी आ गए, पड़ोसी रहते कोई भी, बाद में जो है कोई सेटलमेंट होगा तो जो है उसमें आके फिर सेटलमेंट होगा तो फिर बयान बदल देते। यहाँ पर केस में अगर नहीं हुआ, अगर कोई आके घर जो है, अगर आपको जो स्पेस देना रहता, यू विल हैव राइट्स, तो जो देना रहा है स्पेस, 2 फीट स्पेस छोड़ के रहना है, एयर वाटर सनशाइन के लिए नहीं कर रहे, कोई रास्ता देना है नहीं दे रहे, तो उसके लिए यहाँ पर एक सिमिलर अगर केस हुआ, समझो यहाँ पर एक दिए जजमेंट वहां पर है, तो दैट विल नॉट बी फेयर। सो फॉर दैट रीजन डबल जियोपार्डी, एंड दिस इज द राइट्स एंड ड्यूटीज। व्हाट विल बी द ड्यूटीज, जैसा मैं आपको समझा, अभी एग्जांपल दिया, अगर कोई नेबर है उसको रास्ता नहीं है, अगर एग्जांपल देखिए, दो भाई है, 2 या 3 भाई है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो वन ऑफ देम इज ट्राइंग टू सेल ऑफ देयर शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर जब शेयर बेच रहे हैं तो उसको जो है रास्ता नहीं है, तो दूसरे क्या करना रहता है, वो लैंड में से रास्ता देते उसको, राइट? तो उसको जो है लाइबिलिटी, उनको जो है उनकी ड्यूटी है ये,
रास्ता देना, राइट, रास्ता देना एक ड्यूटी है. सो दैट आर द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज. व्हाट विल बी द लाइबिलिटीज? अगर कोई 2 प्लॉट्स है, उस पर जो है एक प्लॉट एक बना रही, उसकी जमीन पे थोड़ा पार्ट ले लेके उसको एनक्रोच कर लेके जो है उसमें बना ली, तो उसको क्या हो जा रहा है, उसकी लाइबिलिटी हो जा रही. फॉर दैट व्हाट he has to do, he has to compensate, either he has to pay for that land or he has to make way for that and give that portion back. It does not deal with the procedure of trial or enforcement which is governed by the procedural law like code of criminal procedure code. इसका मतलब क्या हो रहा है? डज नॉट डील विद द प्रोसीजरल और ट्रायल ऑफ एनफोर्समेंट. ये जो है प्रोसीजर के तहत नहीं चलेगा, ट्रायल के या एनफोर्समेंट. हर चीज एनफोर्समेंट से नहीं होती. कोई चीज जो है सेटलमेंट कभी करते हैं, अगर जो भी हुआ इसमें जो है, जैसा अपन अभी यहाँ पर पढ़े, कहाँ पर है, लाइबिलिटीज है, ड्यूटीज है, राइट्स है. तो प्रोसीजरल लॉज लाइक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डज नॉट कम इनटू पिक्चर लाइक इन सिविल केसेस. इसके एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं. इसमें जो है आपको, इफ यू हैव गॉन थ्रू द एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल बोथ टू द क्रिमिनल प्रोसीजर एंड सिविल प्रोसीजर, राइट. दोनों में अप्लाई होता. एविडेंस एक्ट खाली क्रिमिनल के लिए नहीं है, सिविल प्रोसीजर के लिए भी है. सिविल केसेस में भी आता है उसके सेम, और उसको जो है क्रिमिनल केसेस में अप्लाई करते हैं. So that he wants to say there. The next coming to the crimes defined in Indian Penal Code. ये हो गया अपना भी. Crimes are defined in India in Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, Civil Procedure Code. किसमें आता है crimes? Indian Penal Code, right? Now अब क्या हो गया Indian Penal Code? अभी क्या हुआ Indian Penal Code रिफॉर्मेशन के अमेंडमेंट के बाद? BNS बेसिक है. You should remember that. IPC is BNS, CRPC is BNSS, and evidence is BSA. The word capital punishment किसको बोलते हैं? डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा, बराबर है. इट वॉज गिवन टू होम लास्ट, इफ यू रिमेम्बर, किसको हुई थी फांसी की सजा? किसको देते हैं? टेररिस्ट एक्टिविटीज. देयर वाज अटैक ऑन ताज होटल, राइट, 2008 समवेयर अराउंड, बराबर है. ताज होटल पे अटैक हुआ, इट वाज अटैक बाय टेररिस्ट. देयर वाज सेंसेशन इन इंडिया. thereafter they were caught and their trial was conducted and there was sentence to death. thereafter the mercy petition was also put before the president के पास पावर है था, कल बोला था मैं, पास किसी को माफ करना सजा. आर्म फोर्सेस के भी पावर्स रहते हैं, उसमें वन ऑफ द पावर इज टू मर्सी पावर. अगर मर्सी पावर अगर प्रेसिडेंट उसमें करते तो क्या होता? नेक्स्ट व्हाट विल बी द सीन? फिर क्या होने की इम्कान है? कंट्री में अगर टेररिस्ट है, कोई अटैक करा, तो उसको अगर माफ करे तो फिर क्या होता? अगेन फिर टेररिस्ट अटैक होता, फिर करते, फिर नुकसान होता. कल अपन वो पढ़े थे, क्या बोलते, पीडी एक्ट पढ़े थे. पीडी एक्ट पढ़े ना कल? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट नहीं पढ़े? ओके, आई थिंक इट इज आगे है. तो पीडी एक्ट में क्या है? पीडी एक्ट में तो जो है लाइक आईपीसी में आपको प्रोसीजर आर्टिकल 21 के तहत करना बोल के था. एनलेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, पुलिस ऑफिसर लाइक व्हाट वाज दैट, उसमें क्या पढ़े थे अपन? क्या नहीं करना? अगर पुलिस अगर करी पीडी, अगर किसी को इलीगल अरेस्ट करी तो क्या होता? क्या अप्लाई होता? हेबियस कॉर्पस, राइट. तो उसमें हेबियस कॉर्पस नहीं कर सकते, इलीगल कस्टडी नहीं होती. जब कोई ऐसा एक्ट हुआ तो उसको जो है पुलिस अरेस्ट करती. दे विल फाइंड आउट व्हाट हु आर अदर पीपल और वेयर आर अदर थिंग्स डिप्लॉयड इन द कंट्री. सो लाइकवाइज फिर उसके बाद क्या होता? इट विल whatever the punishment they will be tried, punishment will be imposed on them and death penalty will be, that is the capital punishment last. And death penalty is to be pronounced in rarest of the rare case. Why? Because it is treated as inhuman. कोई सजा करा तो कितना है, जितनी सजा करा, जितना गुना करा उतनी सजा देना बोल के. लेकिन यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज में व्हाट दे डू, कई लोगों को मारते जान से, बॉम्बिंग्स होते, फायरिंग करते, हुआ ना. so that is not bad. So according to UN conventions, as we have discussed yesterday also, what are the acts that are, there are categories, what to what extent punishment has to be given. You will also study ahead to what extent punishment cannot be given. If it is minor laws, minor mistakes, like they commit minor offense like drunk and driving and all, 1 day or 2 day fine, they will be into the jail and they will also be released for other day and fine will be imposed 2,000 10,000 like that. So यहाँ पर जो है capital punishment का है, refers to putting an end to the life of the offender by the state as a capital punishment for a crime. It is also known as death penalty and it is the highest form of punishment awarded to the most of the serious offenses like murder, terrorism, etc.
मैं टेररिज्म का एग्जांपल दिया था, उसमें मर्डर भी ऑटोमेटिक इंक्लूड है। मर्डर में भी पनिशमेंट देना है, लेकिन मर्डर में क्या करते हैं, पनिशमेंट डेथ पेनल्टी नहीं देते, इसमें जो है मैक्सिमम मोस्टली लाइफ देते। लाइफ कन्विक्शन, इट कैन बी 20 years, इट कैन एक्सटेंड टू लाइफ टिल डेथ, दैट विल बी रिटन while pronouncing the judgment upon the condition, seeing the condition what is most serious offenses. Offenses, what are the different, there are different kinds of offenses: grievous or simple offense, grievous offense, heinous offense. These three kinds of offenses are there. So simple offenses क्या है, कोई चोरी करे, कोई लड़ाई झगड़ा करे, that are simple offenses, लड़ लिया मार लिया, दैट आर सिंपल ऑफेंसेस। सो पनिशमेंट उसमें लेस रहती, उसमें फाइन भी लेस रहता, और उसमें जो है बेल डाले तो जल्दी छूट जाते हैं। फिर सीरियस ऑफेंसेस रहते हैं, इसमें जो है मर्डर केस है, इसमें बेल भी जो है अप टू 3 months बेल वोंट बी ग्रांटेड, राइट। 3 महीने तक बेल नहीं होती। अगर कोई मर्डर करे तो सब बात की बात है, 3 महीने से पहले बेल एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड करे, मूव करे, तो जो है 3 महीने तक बाहर नहीं निकलते हैं। सो वाई इज इट इम्पोज, सो दैट ही कैन नॉट कमिट एनी फर्दर ऑफेंस। फिर उसके बाद उसको कंडीशन इम्पोज करते हैं निकलने के बाद, फिर कोई ऐसी हरकत नहीं करना, फिर कोई ऑफेंस नहीं करना, बल्कि कंडीशन रहते हैं। अगर वो फिर हरकत करा, फिर कोई मर्डर करा, अटेम्प्ट करा, तो फिर उसको क्या होता, फिर दोबारा बेल कैंसिल होती, फिर दोबारा जेल होती। उसमें क्या होता, फिर अगर दोबारा जेल हुई फिर बाहर, तो फिर बेल पे निकल ही नहीं सकता, वो जेल के अंदर रहेगा, जेल के अंदर इन कैमरा, जेल के अंदर ट्रायल रहेंगी उसको फिर। और एक से ज्यादा ऑफेंस करा तो जो है हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाता। फिर क्या होता उसके बाद, पीडी एक्ट लगता, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का भूल गया मैं आप लोगों को बोलते बोलते। प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो है आईपीसी के तहत केस बुक करने की जरूरत भी नहीं है, एक केस करा, ऑलरेडी एक एफआईआर है, केस चल रहा, अगर दोबारा दूसरा तीसरा ऑफेंस करा तो जो पुलिस को कोई वो नहीं है कि जो है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो है इसके ऊपर केस बुक करना, जब उसको जेल में डालना, मजिस्ट्रेट के सामने 24 hours में प्रोड्यूस करना, ऐसा कुछ भी लॉ नहीं है। सीधा पीडी एक्ट है उसका, जैसा सीपी एक्ट बोला था मैं आपको कल, पावर्स रहते हैं बोल के एग्जीक्यूटिव के पास, सीपी एक्ट रहता है। अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट एंड अदर एक्ट्स आल्सो, पीडी एक्ट इज देयर, they will invoke the PD Act, they will put him behind the prison. Intention of a criminal is relevant in crimes, relevant in civil wrongs, relevant in constitutional law, relevant in contracts. किसमें इंटेंशन क्रिमिनल का किसमें मालूम होता, क्रिमिनल इंटेंशन है बोल के, सिविल में मालूम होता है, क्राइम्स में मालूम होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में या कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्राइम्स में। दूसरे क्या है, सिविल रॉन्ग क्या है, टॉर्ट, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, राइट। सिंपल ऑफेंसेस, छोटे मोटे कोई रोजमर्रा के मसले में, अगर कोई जाते जाते गाड़ी से किसी को धक्का लगा, कोई गिर गए, स्लाइट हार्म हुआ किसी को, नॉट डेलिबरेटली, अनइंटेंशनली और विथ नेग्लिजेंस, कोई ऐसा कि सीरियस ऑफेंस नहीं रहना, अभी अपन पढ़े सीरियस ऑफेंस नहीं रहता, टॉट सिविल रॉन्ग। तो सिविल रॉन्ग में अगर कुछ सिविल रॉन्ग हुआ, जैसा अभी अपन प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट करे, डिस्कस करे, वैसा हुआ तो उसमें कंपेंसेशन है, यू कैन अप्रोच टू सिविल कोर्ट। एंड रिलेवेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को रिफर होता है ये मैटर, राइट। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को जाता है रिलेवेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब। फिर रिलेवेंट इन कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब, कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स बिटवीन टू पार्टीज, टू कंट्रीज, कंपनीज, राइट। आधार कार्ड है आपका, दैट दे विल हैव कॉन्ट्रैक्ट्स, दे विल एंगेज इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्रिज बन रही है आप लोगों की, सो दैट इज गिवन टू होम, एचएमडीए एंड मेट्रो रेल इज देयर, वो एलएनटी वाले ले रहे हैं, तो स्टेट विल हैव एग्रीमेंट विद देम, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट है, सो क्राइम्स से उसका कोई रिलेशन नहीं, तीन चीजों से, सिविल से भी, कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्ट्रैक्ट। सो रिलेशन अगर है क्राइम्स का, क्रिमिनल का, तो क्राइम से रहता बराबर। नेक्स्ट, द इंटेंशन ऑफ अ क्रिमिनल मींस मेंस रिया, ये भी लैटिन वर्ड है, देखिए लैटिन वर्ड्स पढ़ रहे ना, कल भी अपन कुछ लैटिन वर्ड्स पढ़े, लैटिन वर्ड से जो है वहां से अपन अडॉप्ट करें कई सारे लॉज, उसके लिए जो है इंटेंशन ऑफ अ क्रिमिनल को जो है मेंस रिया बोलते हैं। इट्स अ रिलेवेंट एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम रहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या रहते हैं, बोलिए आप लोग, क्या समझ में आ रहा है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता। क्राइम कब करता, पहले सोचता उन्हें करूंगा बोल के, इंटेंशन होती उसकी, फिर उसके बाद क्या करता उन्हें, प्रिपरेशन करता, कोई वेपन लेता या कुछ करता, चाकू हुई, तलवार हुई, बंदूक है, वॉट एवर। सो उसके बाद फिर क्या करता, इंटेंशन, प्रिपरेशन, मोटिव रहता उसका, क्या करना, उसको खत्म करना या डराना है उसको, जो भी करना है, फिर ही विल एग्जीक्यूट लास्टली। सो दैट आर द 4 elements of crime as it represents the guilty mind. गिल्टी माइंड का मतलब क्या है, माइंड गिल्टी, गिल्टी का मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोग, गिल्टी मतलब गलत, कोई अगर गिल्टी, व्हाट इज एक्सेप्टिंग द क्राइम, यस, एक्सेप्टिंग द क्राइम, गिल्टी बोले तो। हाँ, नॉट एग्जैक्टली, यू आर बिट नियर, बट गिल्टी का मतलब गिल्ट,
गिल्ट का मतलब क्या है? कोई चीज, कोई जुर्म, गलती, कोई, तो गिल्ट फील हो रहा मतलब क्या होता है आपको? कोई चीज का अगर अपन सोचे भी कुछ समथिंग वी हैव डन बाय मिस्टेक आल्सो, एहसास, so we will realize later on. So guilty mind, अगर guilty mind रहा behind that, so in criminal law a person is generally held liable only when the wrongful act is accompanied by the intention. अब मैं जैसा बोला, चलते हुए गाड़ी पे जा रहे हैं, बाई मिस्टेक किसी को लग गया, तो उसका गिल्टी इंटेंशन नहीं है, वहां पर माइंड गिल्टी माइंड नहीं है, unless he is trying to deliberately harm the other person, only then it is guilty intention and mens rea will come into picture. Only then it is said to be offense. कोई किसी को मारना चाह रहा, कोई वेपन लेके या कोई चीज लेके उसको मारा, तो उसको बोल सकते हैं उसका इंटेंशन नहीं था, गिल्टी इंटेंशन नहीं था, गिल्टी इंटेंशन ही था तभी मारा हूं. ओके. नॉलेज, इट इज अकम्पनीड बाय इंटेंशन, नॉलेज और नेग्लिजेंस. वो कब होता, किस सिनेरियोज में? था इंटेंशन होता एक तो उसका, दूसरा क्या है, नॉलेज है, उसको क्या होता, उसको मालूम रहता अगर इससे मारे तो क्या होता, राइट? इससे मारे तो क्या होता, ढकल दिए तो गिर जाता, गाड़ी पे से मरता, स्पीड व्हीकल पे जा रहा, और स्टैंडिंग ऑन अ हिली एरिया, वन फ्रेंड इज पुशिंग सम द अदर, इन मजाक में कोई कुछ करने गया. हाईली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द क्रिमिनल. Okay, so highly important in determining the guilt. So this, in crimes, this is the most important part to remember. Though it is not there, but I am telling you, guilty mens rea or criminal intention, they'll have in essential elements of crimes. Four things will be there: preparation, motive, preparation, intention, and लास्ट में क्या होता है, कमीशन होता, राइट? और उसके लिए क्या होना है, गिल्टी इंटेंशन होना उसका, वो, और गिल्टी इंटेंशन जो है प्रूफ होना उसका. वो कैसा प्रूफ होता? अब गाड़ी पे जा रहे हैं, जैसा बोला मैं एग्जांपल दिया, वो तो एक कॉमन एग्जांपल हो गया, वो तो नहीं बोल सकते कोई भी, कोई एक दूसरे को पहचानता नहीं, अगर कोई किसी को मारा तो भी नहीं बोल सकते गिल्ट इंटेंशन था. गिल्ट इंटेंशन कैसा होता? टू फ्रेंड्स आर देयर और टू सम देयर आर सम मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, पैसों का कुछ लेन देन है, पैसे नहीं दे रहे तो क्या करते, दियो भाई बोलते, नहीं दिए बोलते, क्या करते, लड़ाई होती, मारते उसको, राइट? तो वो गिल्ट इंटेंशन वहां प्रूव होता, नहीं देने की वजह से मारा था, राइट? Or there will be some personal grudge, enmity between the some groups, right? Some inter-religious castes. You will have, you can see लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं. व्हाट्स नेक्स्ट क्या है? वेट अ मिनट, मोहम्मद कौन सा वाला? अच्छा, ओके, एक मिनट. The word deportation refers to transportation of offender from the society, cutting down the offense, inflicting the death penalty. None of the above. Deportation मतलब क्या है? I'll tell you. The term capital punishment, अभी capital punishment पढ़े थे. capital punishment मतलब death penalty, right? उसमें life imprisonment होता है, death होती. In rest of the case, refers to putting an end to the life of an offender by the state as a punishment for crime. क्या बोल रहा है इसमें? End to the life of the offender by the state as a punishment. एक कोई ऑफेंस करा, एक मर्डर करा, फिर उसके बाद फिर जेल से निकला, फिर एक दोबारा मर्डर करा, तो उसको क्या करते हैं? लाइफ नहीं देते, पहले तो ऑलरेडी लाइफ हो गई उसको फिर क्या करते हैं? डेथ पेनल्टी देते कंपलसरी. वाई? बिकॉज again he should not jump from the jail. Bas, you have seen cases in Tihar jail, murder in the jail itself. They will run out of the jail, sometimes the criminal escape from the jail, they'll commit the, again they will commit the crime. So that will be difficult for the police to stop them. So what they will do, they will have two scenarios, either to put him in PD Act or to give him capital punishment, right? In criminal law, the person is generally held liable only when the यही पढ़ रहे थे अपन. Generally held liable only when the wrongful act is accompanied by the knowledge. कौन सा था? Capital punishment, deportation. So deportation क्या होता है? It is also known as the death penalty and is the highest form of punishment awarded to the murderers like terrorism. Deportation, inflicting death penalty. पहले क्या होता था? काला पानी बोल के सुने आप लोग? काला पानी सजा देते थे. अंडमान निकोबार आइलैंड्स वहां पर सेंड करते थे दूसरे आइलैंड्स पे. फ्रीडम फाइटर्स, दे यूज्ड टू राइट, इवन व्हेन दे आर पुट इन द जेल, दे यूज्ड टू राइट फ्रॉम द जेल्स. फिर वहां से जो है इनकलाब शुरू होता था. प्रिंटिंग प्रेस वर एस्टैब्लिश्ड, even that were closed. Many of the freedom fighters, they sacrificed life for us. So what they used to do, deportation to other islands and given the inflicting death penalty there, right? Is that Mohammed? Next paragraph. 90 हो गया ना, कंप्लीट हो गया पूरा. डे 3
Okay, thank you. See, some questions, repeat also, don't worry. Because excuse the fact that methodology will be way same matter like our two as I told you, and to each other. So that's what you have to understand that it is same answer. Then you have got multiple choices there actually. So you don't need to worry. So, let's take on. See that one question is having the question number 4. Question number 4 का क्या होगा? यदि गुलाब लेके आए ये वाला है हाँ but उसमें वो पेंसिल कलेक्शन से तो just that fine. Nice this time. Okay, fine. So let's start today's day. Today's MCQs. This is very simple. Yesterday I told you few of the questions. Sometimes it may repeat, so don't need to worry. So the first one is already yesterday I taught you that the most southernmost point of India is none other than Indira Point. Okay. So it's actually the southernmost tip of the Andaman and Nicobar Islands. Yeah. Now see a little bit of knowledge you should gain in this topic also. Tropic of Cancer passes almost through the middle of. Here the options are changed. Okay. I'm not talking about particular country over here, but they are asking entire world. Among the world, which all countries it can hit and go. So first option, India, China, Africa, Australia. If such question comes, don't get confused. India is the correct answer. So it passes through India. The Tropic of Cancer passes almost through the middle of India, dividing the country into roughly northern and southern half. Okay, this is one of the question. Second type of question जो वो लोग बनाते हैं, वो कौन सी line है? Which is that imaginary line that makes India into two different or two halves? वहां पर क्या करते हैं आपको Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn और Arctic Circle और Antarctic ऐसा टाइप का ऑप्शन आते हैं. तो यहाँ any type of MCQ can be created, but the knowledge what you have in your mind should be first. Yes, Tropic of Cancer passes from India. Okay, the Tropic of Cancer passes almost through the middle of India, dividing the country roughly into northern and southern hemisphere. It passes through 8 states. They can even ask you the numerical data. How many states does the Tropic of Cancer touches? Okay, so you need to know 8 states. If they are telling among, you have to remember these states: Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura, Mizoram. And what next they will do is another type of MCQ. Which state the Tropic of Cancer doesn't touch? नहीं छूता है. तो लोग क्या करते हैं, 3 दे देते, एक ऐसा देते जो आउट ऑफ द बॉक्स है. तो वैसे टाइप में भी आपको वो आउट ऑफ द बॉक्स जानने के लिए पहले 8 मालूम रहना चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट? सो ये 8 आपको थोड़ा मेंटली याद रखना है कि कौन से हिट होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. गुजरात की लाइन आप ब्रेन में रखिए, उसके इमीडिएट टचिंग में राजस्थान है, मध्य प्रदेश सेंटर में है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम तक वो लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दीज 8 अगर कोई डाला जा रहा है, is this opening?
Can you see Jabal? I don't know what's this open. Yeah, which river? This we have already discussed yesterday. Sorrow of Bengal because of the devastating floods. It is none other than Damodar. Okay, it's located in Chota Nagpur. Yeah, this is a bit of error over here. It is not this option, ma. It is Vular Lake. Okay, please remember it is located in Jammu and Kashmir in Bandipura area over there. And ever if any question comes, if at all it is coming in particular state like Kerala, then only it is correct. Okay, it's not the correct answer. Sorry for this. Yeah, which mountain range separates India from Myanmar? As you know, Myanmar and India are two different. So what all comes in between? Himalayas, Aravalis, Purvanchal Hills, Vindhya. So Purvanchal Hills is the correct answer. We'll discuss about it. Now, the Purvanchal Hills are a group of eastern extensions of Himalayas. Eastern extension. Extension means, ma'am, फैलाव, उसका जो रीच है, उसकी पहुंच है, वो अरुणाचल तक भी है. ओके, ईस्टर्न साइड तक भी है. तो पूर्वांचल हिल्स वहां के नाम वहां पर दिए गए हैं. वो वाले जो हिल्स है वो हमारे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आसाम के पास लोकेशन में आते हैं. नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है ये वाले. ओके, जैसा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट ये हमारे साउथ के हैं, वैसे ही अरावली हमारा थोड़ा सेंट्रल पार्ट में आता. ये वाले पूर्वांचल पूर्व ईस्टर्न साइड में आते हैं. ठीक है ना. चलिए, डेक्कन प्लेटो, ऑब्वियसली कल भी मैं ये बात पढ़ाई थी कि एक्चुअली देखा गया तो इसके पास बहुत ज्यादा रिच मिनरल्स है, पर उन मिनरल्स में भी सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी रिच किस में है? देखिए, आप क्वेश्चन आपको टेढ़े बेढ़े बनाकर पूछे जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है. बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस पाया जाता है का क्वेश्चन पूछा गया था, आपने आंसर किया था प्लेटो. ओके, दैट टू. उसके बाद अब जो डेक्कन प्लेटो में जो मिनरल्स मिल रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा रिच मिनरल क्या है? लोहा है. ये बात याद रखेंगे. सोना है, कोयला है, आयरन है, मीका है, ये पूछा जा रहा है. इसमें से करेक्ट आंसर आपको आयरन है. देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना. डेक्कन प्लेटू का सबसे रिच मिनरल क्या है पूछा जा रहा. ओके, और वो जो पूछा गया था आपको कि छोटा नागपुर प्लेटू में सारे रिच मिनरल्स मिलते हैं, वो अलग है, वो थोड़ा डिफरेंट है. जैसे लाइम है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, मैंगनीज है, ओके, बॉक्साइड है, वो वाले मिनरल्स वहां पे है. वो रिच इन मिनरल रिसोर्सेज जरूर है डार्क प्लेटू, बट इसका स्पेशली क्या है? देखो, यहाँ पे बहुत जरूरी है ये समझना. क्वेश्चन किस बात के बारे में पूछा जा रहा है? इट इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर रीजन. डेक्कन प्लेटू में क्या चीज ज्यादा पाई जाती है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, the Deccan Plateau is rich in minerals such as manganese, especially in Maharashtra, Karnataka. Bauxite used for aluminium production. Iron ore mainly in Karnataka, Goa and Maharashtra. Limestone, again, cement industry. It's a volcanic and igneous rock formation. Makes it mineral rich region in India. Okay. Now, which state has the longest coastline? This was taught on the first day, I think. So yes, Gujarat. So yeah, it is having the longest coastline in our country. You can keep the measurement in your mind because this type of MCQs can be also constructed. Okay. Tell the longest coastline length. Options, they can be very easy. So you should know at least approximately, if you know the, you can pick on the correct answer. 1,600 kilometers along the Arabian Sea. Okay, if they can ask you which side it falls on, that also you can write. See, many kind of MCQs can be created from one basic question also. Now, which river forms the Sundarbans Delta? I taught you about the delta. Yes, Sundarbans are nothing but the area over. Even I have the image, I can just share it with you. Just a minute, hold on. I just wanted to show you what is called delta actually. That day I've explained, but since I was in the plan to show you what is that actually, because you should keep it in your mind. Yeah, as I told you, the spectrum of the rivers, how it forms. As I told you yesterday, right? What is that? Can you see that? It's very small image over here. If I can enlarge it, I will show it to you. See, like this. The sea comes, you know, flowing in a one current and suddenly it becomes a spectrum. Can you see this? Okay. Like this. You are able to see this distance, no? Yeah. So, none other than Ganga and Brahmaputra. So, here, the river that forms the Sundarbans. Now, see, the question here is again confusing. What is the world's largest delta? Again, Ganga and Brahmaputra. Now, what they are asking again here, the river that forms Sundarbans, again, that is the same only. So, questions are cross-questioning type, like different way they are asking, but the answer will be same only.
Yeah, this is of river Ganga along with its distributary, the Brahmaputra river. They combine sediment deposit, creating the large mangrove forest also. Here they're adding it, and located in West Bengal, India, and Bangladesh. They can even ask you location also. Which is the highest peak in South India? Now they are asking you about South India. Okay, highest peak in South India. Now we are not talking about North India over here. In North India, they are asking you have to say Kanchenjunga. Okay. Now, if they're asking in South India, it is just have a look. Anaimudi, Doda Betta, Mahendragiri, Nilgiri. So the correct answer is A, Anaimudi. The highest peak in South India is Anaimudi, located in Western Ghat. Keep this in your mind. Western Ghat, what I taught you yesterday, day before yesterday also. Highest approximate measurement of that height is 2,695 meters above the sea level. It is situated Eravikulam National Park in Kerala. Okay. You have to keep this in mind. The last state where our Western Ghats end. The Thar Desert lies mostly in which state? Now, see, this is, I told you that Thar Desert will extend till Pakistan also, Punjab and Sindh area also. But most major part of Thar Desert is located in which state or which country also, they can ask. Anyway. Okay. State means obviously we will say Rajasthan. Okay. Now, here, Gujarat, Rajasthan, Punjab, Haryana. Now, don't get confused with Punjab because Punjab is even in Pakistan and even this area, but it is not over there. Okay, the answer for this question will be Rajasthan. Rajasthan is a state which is located in northwestern India, known for its desert landscape, grand fort, and even the vibrant culture that I've already taught you. Is the most largest state by area also, as we have understood which is the largest state in our country, Rajasthan. According to population, if they are asking populous state, it is Uttar Pradesh. Now, this we have already studied. Which river is called Dakshina Ganga? Godavari is the correct answer over here. See, few 2-3 questions are just repeating, but rest all are different. Again, small area, small state in India is Goa. Goa is a coastal state in the western India, bordered by Maharashtra to north, Karnataka to east and south, Arabian Sea to the west, known for its golden beaches. Now, they can even ask you this question. Which state is famous for the golden beaches? It's not necessary they will just ask you area. Which is the smallest state in the country? If they ask you easily, you can say Goa. But if they cross question you, they'll manipulate you and they'll ask you, कि भाई सबसे ज्यादा golden beaches कहाँ पर है? ऐसा भी पूछा जा सकता. या फिर which is famous for the golden beaches? Which state is famous for golden beaches? तो आपको गोवा ही टिक करना है, ठीक है ना? इवन दो ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म कहाँ पर होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता. सबसे ज्यादा हाईएस्ट टूरिज्म कहाँ पर होता है? मोस्ट प्रोबेबली नॉर्दर्न साइड पर होता है, और इवन गोवा इज वन ऑफ द स्टेट जहाँ पर टूरिज्म ज्यादा होता है. ओके, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंजेस? नाउ मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू. द लोकेशन देयर आर. नाउ इट इज बिटवीन अरावली एंड विंध्या. Aravali comes in the arc of, the area where Gujarat is. Okay, somewhere near that. And this Vindhya comes at the border line of the north side of the Deccan Plateau. Okay, our plateau starts and there it is located. So what is this? They are like this and they are like this. When you have studied in social studies in your earlier classes, this side you will draw the Aravalis, yes, and downside little slantingly you would have drawn the Vindhya ranges. So Vindhya ranges are actually the correct answer, Malwa Plateau. Okay. Malwa Plateau comes between those two hilly areas. Okay. Malwa Plateau, actually spelling mistake is done. Malwa Plateau is highland region in the southern part of Rajasthan, forming part of ancient Aravalli mountain system. It is characterized by rolling hills, dissected plains, fertile valleys, playing a crucial role in the geography, ecology, cultural heritage. History. Now, which state is known as spice? This is Kerala. This is also taught. Now, which river flows through Rift Valley? Ma'am, Rift Valley. What is Rift Valley, ma'am? Anybody knows what is Rift? Rift Valley, ma'am. No idea. देखो, जब एक जमीन जाके किसी जमीन से टकराती तो माउंटेन क्रिएट होता, ठीक है? टेक्टोनिक प्लेट्स होते, मूवमेंट होता, फोल्डेड माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं, एंड दे आर वेरी डिवास्टेटिंग एज वेल एज बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी क्रिएट होती है. बट व्हाट इज रिफ्ट मैम? कुछ लैंडस्केप्स अपार्ट होते हैं, ओके, जो टेक्टोनिक प्लेट्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाता. पहले अटैच होने का मूवमेंट हुआ तो माउंटेन्स क्रिएट होते, और अगर डिटैच होने का सीन होता है तो रिफ्ट क्रिएट होती है. यू कैन सी हियर. ओके, रिफ्ट वैली. अब वैली है मैम, कैसा बोलना? रिफ्ट वैली बोले तो वो जगह
जहां पर ये गैप आ गया है तो ऑब्वियसली जो लो लैंड है वो क्रिएट कर रहा है, नीचे की जमीन की प्लेट दिख रही है, ठीक है, ये वाले प्लेट्स हट रहे हैं और नीचे की प्लेट जाहिर हो रही है, बट एक तरह से वो एक गड़ा या एक ओपन एरिया बन रहा है, एक लो लैंड भी बन रहा है, सबवे टाइप, बट ये वाली प्लेट हट रही है। ओके, तो इस तरह के एरिया को हम रिफ्ट कहते हैं। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए, विच रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली? एग्जाम्पल्स है गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। नर्मदा इज द करेक्ट। ओके, अब देखो, आप मैं रिफ्ट बता रही हूँ, आपको रिफ्ट याद रखना है माइंड में, ठीक है। सी, हर एमसीक्यू तो नहीं वो हो सकता, तो कुछ कुछ फोटो से या कुछ निमोनिक से आपको याद रखने होंगे। रिफ्ट मतलब डिपार्ट हो जाना, लैंड का डिपार्ट होना, टेक्टोनिक प्लेट्स का हट जाना, जिसकी वजह से गैप बीच में आ जाता है, उस गैप के दरमियान से पानी का बहाव है, तो वो वाली नदी कौन सी है? रिफ्ट वैली में ऐसी नदी जो जमीन के हट जाने या फट जाने के बाद जो जगह बनती है उसमें से बहती है, उसका नाम नर्मदा है, ठीक है। चलिए, the river that flows through a rift valley in India is none other than Narmada. It flows between Satpura and Vindhya range, occupying the Narmada Rift Valley. This valley is a classic geological feature formed by downward displacement of land. उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, जो मैंने आपको पिक्चर में बताया, उस चीज को, वो प्रोसेस को, जो टेक्टोनिक प्लेट्स का हट जाना, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ऑफ लैंड बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट्स। व्हाटएवर इज द रीजन, वो फटने पर वो रिफ्ट क्रिएट होती है, ठीक है ना। चलिए, which state has the largest forest area in India? सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कि वो एरिया में हमारे प्लेटू के ऊपर जो विंध्या रेंज है, उसके आजू बाजू का एरिया पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट से भरा हुआ है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का एरिया वहां पर लोकेटेड है, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंडिया का आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है ना। द स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज मध्य प्रदेश. It has dense forest covering around 77,000 kilometers square, which is about 25% of India's total forest area. ऐसा भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि किस स्टेट में इंडिया का 25% से भी ज्यादा फॉरेस्ट अवेलेबल है, या ऐसा भी बोला जा सकता है कि कितने प्रतिशत का फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है, तो यू शुड नो व्हाट इज दैट। ओके, नाउ द फॉरेस्ट इंक्लूड्स ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस ट्री। अच्छा, ये वाले भी पूछते हैं क्वेश्चन कभी कभी कि भाई फॉरेस्ट है, नो डाउट अबाउट दैट, बट इसमें ज्यादा से ज्यादा बैम्बू फॉरेस्ट कहाँ पर है, या पर्टिकुलर कोई चीज का नाम लेके पूछा जाता है कि ऐसे वाले मटेरियल का फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ लोकेटेड है, तो दिस ऑल यू हैव टू नो। ओके, सो यहाँ पर देखिए, आपको इसमें आपको ये सारे आइटम्स मिल रहे हैं मध्य प्रदेश के लोकेशन में, कि आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादा मिलेंगे, टीक भी वहां पे कल्टीवेट होगा, बैम्बू फॉरेस्ट वहां पर ज्यादा नजर आएंगे, प्लस बहुत सारे टाइगर्स, लेपर्ड, डीर्स के लिए ये अपना उनका घर है, habitat. Now, which Indian state is called the land of five rivers? Which Indian state is called the land of five rivers? यानी एक ऐसी जमीन जिसमें पूरे 5 के 5 नदियां मौजूद है, ऐसा कौन सा स्टेट है? यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार दिया गया है। करेक्ट आंसर इज पंजाब, ठीक है। इसलिए भी तो आप उसका नाम भी पंज है, समझ में आ रहा? आप इस नाम के निमोनिक से याद रखिए, पंजा याद रख लिए तो आपको 5 याद रहेगा, 5 याद रहेगा तो आपको नदियों को अपने दिमाग में रखना है कि वही स्टेट में 5 नदी है, इसका नाम पंजाब है, टेक इट लाइक दैट, ठीक है ना। चलिए, तो पंजाब में क्या है भाई, क्या खासियत है? इंडियन स्टेट कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब, द नेम रेफर्स टू द 5 रिवर्स। हाँ, ये बात याद रखना है, ये बात याद रखिए कि अगर ये भी पूछा जा सकता है, ये 5 नाम देके कि ये वाले नदियां किस स्टेट में मौजूद है, ऐसा पूछा जा सकता, या फिर स्पेसिफिकली कोई एक रिवर को लेकर भी पूछा जा सकता है, ये रिवर कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है। या फिर ये बोला जा सकता है कि पंजाब के 5 नदियां, इनमें से कौन सी है? ए में भी 5, बी में भी 5, सी में भी 5, डी में भी 5 देंगे, आपको गेस करना है कि विच ABCD में से करेक्ट वाला सेट ऑफ 5 ग्रुप ऑफ रिवर्स कौन से हैं। इसीलिए आपको ये लर्न करना मत चाहिए। ओके, एनी क्वेश्चन बोले ना आपको, दे विल क्रिएट एनी एन नंबर ऑफ एमसीक्यूज एंड वेरिएंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज फॉर यू ऑल। ओके, पहला देखिए सतलुज, हम इसको कैसे याद रखेंगे? चलो फर्स्ट लेटर से एक निमोनिक बना लेते ताकि आपको याद रहना चाहिए, SBRCJ। आपको ऐसा सेट याद रख लीजिए, जैसा यूजुअली हम लोग अपने फ्रेंड ग्रुप्स में बना लेते। हाँ, तो इस निमोनिक को देखिए SBRCJ से आप याद रख लीजिए प्लीज। ओके, याद रख लेंगे, जस्ट टेक अ नोट इन योर बुक कि आपको ऐसा याद रखना है 5 रिवर्स कैसे है। सतलुज, बीज, रवि, चेनाब एंड झेलम। SBRCJ, सीजे तो सबको याद है, SBR लिख लीजिए। ओके, चलिए, द मोस्ट हिस्टोरिकल पंजाब रीजन नॉट
partly in Pakistan. अभी वो जो एरिया हम बात करें वो पाकिस्तान का नहीं, हमारा पंजाब. पंजाब इज नोन फॉर फर्टाइल प्लेन्स एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. जाहिर सी बात है, प्लेन्स है तो हमारा तो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर में ही डिपेंड होता है मेजरली. पहले के सर्वे के हिसाब से मेजरली डिपेंड थे अपन एग्रीकल्चर लैंड. अभी नहीं, अभी तो टर्शियरी सेक्टर ज्यादा चल रहा है. ओके, अगर ये भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप बोल सकना कि एग्रीकल्चर था पहले लीडिंग सेक्टर, बट अभी इंडस्ट्रियल भी मॉडरेट पे, टर्शियरी इज लीडिंग नाउ. चलिए, व्हिच इज द वेटेस्ट प्लेस? यस्टरडे हमने देखा कि सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पर होती है? मोसीराम में होती है. नो चिरापुंजी, शिलोंग विलोंग में नहीं होती, गुवाहाटी में नहीं होती. Musiram is a village located in the East Khasi Hills district in Meghalaya, India. It is widely recognized as one of the wettest place. Extraordinary annual rainfall होती है due to the monsoon patterns. चलिए, Gateway of India. Which port is known as the Gateway of India? Chennai port, Mumbai port, Kolkata port, Visakhapatnam port. Let us see Mumbai port. Now, why the port is known for as the Great Way of India? In the Mumbai port associated with the city of Mumbai. Why is it called so? Let's see. It is called so because it is served as the entry point for trade and colonial administration during British era. That is why we call it as a gateway of India. Because earlier when the British used to come and go inside, in and out, they used to use this area. So that's the reason they call it as Mumbai port is the in and out of the trade and colonial administration during the British era. That is why it is given the name as Gate of India. Now, what is this? The iconic Gate of India monument was built to commemorate the visit of King George V and Queen Mary in 1911. ये बनाया क्यों गया था? एक तो इन एंड आउट करने के लिए, मूवमेंट के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, के बाहर जाने देश के, तो हमारे मुंबई के पोर्ट से बाहर जाते थे और आते भी थे तो वहीं से आते थे. और इनके लिए स्पेशली बनाया गया था कि इनके लिए किंग जॉर्ज वी, दैट इज नॉट वी, 5, किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मेरी इन 1911. ठीक है ना? As you will read in the history further, 1906 में ही उस जमाने के जो क्वीन थे उन्होंने एक ग्रुप को परमिशन दे दी थी कि इंडिया के साथ आप रॉयल चार्टर बोलकर के उसको आप जाकर बिजनेस कीजिए इंडिया के साथ. वो लोग परमिशन ग्रांट हो गई थी उनको, तो वो लोग इंडिया आए थे 1906 अराउंड. they got that permission, royal charter. Royal charter is nothing but an agreement by the queen to those group of people to go and do the business in India. So उसी के बाद इन लोग का ये पोर्ट बन गया था. 1911 is nearest to that date only. Okay, 1906 में परमिशन मिली, वो लोग एंट्री कर लिए. आने के बाद जब वो लोग यहाँ पर एस्टैब्लिश कर लिए थे, थोड़ा बहुत अपना स्टैंड ले लिए थे, जब क्वीन एंड किंग यूज्ड टू कम एंड गो, तो उसका ये गेटवे बन गया था. Which soil is best for cotton cultivation? Black soil. चलिए, इंशाल्लाह by 50 days पूरे आप लोग इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे इंशाल्लाह. The best soil for cotton cultivation is black soil, even called as rigor soil. उसके तो पूरी composition है. The longest river in India is again Ganga. We will not consider Brahmaputra. And it is a very cultural and spiritual river for the Hindus. Which plateau is known for mineral resources? Again, Chota Nagpur plateau. Why is this question repeating again? I've already taught this. Yeah, again, this is also repeated one. The state with the largest population is Uttar Pradesh. Okay, yeah. Let's read this. Which Indian river originates from Amarkantak? Now, which is this location? We need to understand. Which river is generating? Narmada. So, this is the land where the rift got occurred. And due to that rift, now that Narmada is flowing from there. Okay, next is, it is located in Madhya Pradesh, children. Okay, and again, this is also recognized as a very holiest river. In our country, India, rivers are being very much, what to say, respected, or, क्या बोलना चाहिए, उनका बहुत धार्मिक महत्व है हमारे देश में. उसका बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है. तकरीबन नदियों को, और स्पेशली हिंदूज का तो बहुत ज्यादा उनके ऊपर बिलीफ सिस्टम है कि मल्टीपल रीजंस की वजह से है वो वहां पर. चलिए, कोल्डेस्ट प्लेस. Okay, which is the coldest place in India? Leh, Dars, Shimla and Manali. ये ऊपर के इलाके हैं बच्चों. ओके, इसमें से सबसे ज्यादा, वैसे तो पूरा ही कोल्ड है वो एरिया, बट स्टिल उसके अंदर की जो टेम्परेचर लेवल है जो सबसे एक्सट्रीमली लो है वो वहां पर दार्स में है. दार्स इज अ माउंटेन टाउन इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, situated along the Srinagar Leh highway. Yesterday we studied about a pass. So that area where the pass is located, it is renowned for its extreme cold and strategic location near the line of control. Now, what is line of control?
लाइन ऑफ कंट्रोल भी पूछा जा सकता है. आई विल टीच यू इंशाल्लाह के वो एरिया के बहुत सारे बॉर्डरिंग लाइंस में कौन से लाइन क्या है, बिकॉज उस एरिया में डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के डिफरेंट नेम्स है और वो क्यों दिए गए थे उसके रीजंस के साथ इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा. लाइन ऑफ कंट्रोल जब हमारा आई मस्ट से दैट इंडो पैक का जो वॉर हुआ था इन 1971 अराउंड, उस टाइम पे कुछ आफ्टर सो मेनी वो लोग पाकिस्तानीज केम ऑन टू द नीज एंड वी हैड इंदिरा गांधी हियर एंड शी हैड एक्सप्लेन कि भाई ठीक है, जो आपका पहले तो वी वेर एक्सपेक्टिंग कि लाहौर भी हमारे कब्जे में आना चाहिए, बट हम लोग एट दैट टाइम इंदिरा थॉट अबाउट दैट, मैडम इंदिरा के नहीं, चलो लेट द पीस बी टेकन ओवर हियर बाय टू टेक अ मोर ओवर डिवास्टेटिंग रहेगा condition. So she agreed to a condition that there is a line of control through which Pakistani should not interfere or intervene in the country, and okay, let them take that particular area of Lahore. She could actually win the war, but we won the war, but she had arranged agreement over there. Okay, so that's okay. That area you can have it in your country. Let's not fight more over for this. And she made a line of control between our two countries. Okay, in 1971, this agreement was done. 71 was the war year, 71, and this agreement was done in 72, 1970. And again, further, they even had a conflict afterwards. Kargil war was there. But again, that conflict arose in 1999 due to some other reasons. Maybe they again started quarreling over there. Now, we are just talking about the region over here. Ladakh region, Kargil district is the location. Which is the largest delta in the world? You all know about it, Ganga and Brahmaputra. I don't know why this today's PDF is so same, how it possible. Which state is famous for tea production? Yesterday we studied about wheat, we studied about coffee, we studied about jute as well, and now we are studying about tea and even rice also. Here the famous state for tea production is none other than Assam. Okay, Punjab, Assam, Gujarat, Rajasthan. So Assam is the correct option. Let's read about a little bit of Assam, because Assam is again one of the best area. Assam Valley is renowned for its tea and strong black tea variety. Assam दस बोल के बहुत सारे जनों की शॉप्स पे दिखता है, तो आपको आसाम याद ही रहेगा. आई डोंट नीड टू से द निमोनिक हो गया. चाय की दुकानों पे अक्सर आसाम टी लिखा हुआ रहता ना, ये याद रख लो कि बेस्ट प्रोडक्शन टी की आसाम में होती है. ठीक है ना. नाउ कमिंग टू द टी प्रोड्यूसिंग रीजन, बहुत सारे हैं सिग्निफिकेंट फॉर दैट ओनली. टी का आउटपुट भी मेजरली बाहर जाता है, हमारे से इंपोर्ट किए जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट होता बाहर. तो हमारा आसाम plays a very vital role in this tea production. Which is the highest dam in India? Let's do Bhakra Dam, Tehri Dam, Hirakud Dam, Sardar Sarovar Dam. Tehri Dam is the correct answer. Why is it very much big? Let's see. The Tehri Dam is the multi-purpose rock and earth-fill embankment dam on the Bhagirathi River in Tehri, Garhwal district, northern India. Okay, and the size of this is highest 260.5 meter, that is 855 feet height. It's India's tallest dam and among the tallest in the world as well, forming the centerpiece of Tehri Hydro Development Corporation. This is, you can keep a note, kabhi abbreviations bhi aa jate hain. What is the full form of this? So चार full form दे देते हैं, आपको find करो बोलते. So this is one of it. THDC, you should know, Tehri Hydro Development Corporation. बेसिकली हम ये जो डैम्स बनाते हैं, ये हमारा हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए बना. पानी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, दैट इज द हाइड्रो पावर स्टेशन. तो मेजरली हम लोग डैम्स का इस्तेमाल करते हैं इसको कलेक्ट करने के लिए, जनरेट करने के लिए. ठीक है. तकरीबन डैम्स में हम हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर क्रिएट करते हैं. Which island group lies in Arabian Sea? Lakshadweep. See, that day yesterday I told you, ऐसा भी पूछा जा सकता कि कौन सा अरेबियन सी में है या अरेबियन सी में कौन सा है, ऐसा पूछा जा सकता. Which is the capital of Arunachal? Why is this getting again and again repeated? This is what I'm getting confused today. Is it done? See, today I'm going to check why is it repeated again. Okay, but today this is enough. Regarding the rivers and all, famous river, famous lakes, I have made a PDF. Sir will share it with you on the group, inshallah. Everybody will get the access. Nearly 60 rivers, their sizes, their locations, their significance, what are they famous for, and their movement towards which side. Is it eastern moving side or the western moving? Every detail I have made a PDF. So I'll tell sir to upload it today so that you go and revise today all the rivers, 60 rivers. So I am giving a homework is like
You should be more perfect in your examination. Inshallah, you will do it. I know. I'll request Mohammed to put it today so that weekly one PDF also, if we are giving according to the subject wise, it will be very useful for you. So 60 reverse PDF, inshallah, today I'll upload it on the group. I'll tell him to upload it, and inshallah, you can read today. If not today, tomorrow morning, you can read it. And make sure you're learning each and everything, the size, the location, the flow, and what is significant about that. Okay, some very important points regarding that. That is there in that. Okay, sure. Yeah, so many of them were repeated actually. 4, 5 were repeated. Okay. So I'll give you the names. Orally, we'll discuss some rivers over here. This is the PDF you will be getting. Inshallah, you can go through all the rivers in detail. See, I just request you for today. This is the PDF which I've shared with you. So you can send them because it's the famous rivers of India, nearly 60. Okay, I will put it. Okay, this is a PDF they can go through. I'm just giving an objective type only, beta. Objective in the sense, I'm not putting options over there. All the details in 1, 1, 2 words I'm putting. Because it's going to be MCQ exam, right? We don't need to learn lengthy sentences over there. So very briefly, it is going to be very useful for you all. Okay. So for this, today I'm going to put the PDF. You can go through with that. Today, please learn all the rivers over here. Okay. Okay, here the class for today will end now only. Please make sure that you all are learning the details about the river given to you all. Yeah, students, need out, please let me know. Yeah, children, if you have any doubt, please let me know. Are they still mute? Yeah, I'm going to share the PDF in the group. You all please refer the rivers. In that, there are approximately 60 famous rivers of our country, India. Please go through the data. Okay, okay, sure. So please, I'll send it in the group. All of you, please go through that PDF. And each day, most probably either day or weekly, we'll put some PDFs. Please refer those. It will be very beneficial for you all. In the exam, it will be very useful. All right? Okay, okay, sure. Thank you. Have a nice day. Take care. See, students, see, you can score very good because in the PDFs, inshallah, the most hashtag questions only we are considering. And inshallah, the way we are going to create PDFs for you, those are very helpful. Okay. Once you see the PDF, you will understand it. Okay. You have to even go with the other PDF. Not only these MCQ PDFs, we are trying to give you the material PDF also. But we are making the data very limited. Means we are not putting the sentences. We are just making you to understand briefly because those point only they can ask you. All right, just see the PDF. Inshallah, I'll send you now within some time and you will understand. Okay, take care. कैपिटल पनिशमेंट मतलब अगर कोई बड़ा ऑफेंस है, बहुत बड़े बड़े ऑफेंस जैसे डीआरडीएल में आपका फादर वर्क करते हैं, डीआरडीएल में आपका पूरा है ना आर्म कोड होगा, वहां पर एयरफोर्स होगा, वहां पर अगर वहां के डीआरडीएल में है ना जैसा कि है ना आर्म कोड करते हैं